नाम लिख के दीजिए ना सबके। जी मैं बोल देता हूँ। आप किसमें लिखेंगे? इंग्लिश में लिखेंगे। ये निकाल के दे दीजिए ना, उनका मत ठीक है, किसी को बुला वो चेंज करा दीजिए ना। पहले इसने कलाकार बोल दिया, she doesn't know that's a different connotation. Especially in Hindi and Urdu, it has a different connotation. Had it been somebody else in my place, he would have not come to the mic. We are not artists. It's not that, it has a different connotation in our language. It suits politicians. एक नहीं आया, दो नहीं आए, दो नहीं आए। Maybe he comes. You can start it, there's no problem. Yes, you can start it. Have they changed it? Yes.
Welcome, sir. Thank you, sir. कार्यक्रम का दूसरा सत्र भारतीय साहित्य में नदियाँ। भारतीय साहित्य में नदियों का जीवन की यात्रा और उसकी निरंतरता का प्रतीक माना गया है। नदियाँ मनुष्य के संघर्ष और सौंदर्य का भी प्रतीक है। एक प्रसिद्ध पंक्ति साझा करना चाहूंगी कि नदी की तरह बहते रहो, नदी की तरह बहते रहो, चाहे राहें हो कठिन, जीवन के हर मोड़ पर सागर से मिलना है तुम्हें। इस कार्यक्रम की शुरुआत हो चुकी है और दूसरा सत्र भारतीय साहित्य में नदियाँ। इस सत्र की अध्यक्षता हम आपको बता चुके हैं, मोहम्मद जमा आजुर्दा जी द्वारा होगी। हम आपको इनसे परिचित करवा देते हैं। मोहम्मद जमा आजुर्दा जी कश्मीरी और उर्दू के लेखक, कवि और अनुवादक हैं। आप कश्मीर विश्वविद्यालय में उर्दू के प्रोफेसर रह चुके हैं। आपके उर्दू में 5 निबंध संग्रह, कश्मीरी में 3, उर्दू में लेखों के 2 संग्रह, उर्दू कहानियों का 1 संग्रह, कश्मीरी कहानियों का 1 संग्रह, अन्य भाषाओं से कश्मीरी में अनुदित 10 से अधिक पुस्तकें, अंग्रेजी और कश्मीरी से उर्दू में अनुदित 2 पुस्तकें प्रकाशित हैं। आपको साहित्य अकादमी पुरस्कार, साहित्य अकादमी अनुवाद पुरस्कार, आजीवन उपलब्धि के लिए मौलाना अबुल कलाम आज़ाद पुरस्कार, जम्मू कश्मीर कला, संस्कृति और भाषा अकादमी द्वारा अनुवाद पुरस्कार प्राप्त है। मैं चाहूँगी कि एक बार ज़ोरदार तालियों से पुनः इनका अभिनंदन करेंगे और मैं आपको यहाँ पर आमंत्रण करना चाहूँगी। सर, स्वागत है। All these people at the beginning, so that later on, ओके, बार-बार आपको उठना पड़ेगा। श्योर सर। अन्य प्रतिभागी हमारे बीच अजय सिंह चौहान जी। आप एक प्रतिष्ठित गुजराती लेखक हैं। He is absent. Mr. Chauhan is not here. He will. अनुराधा शर्मा पुजारी जी। अनुराधा शर्मा पुजारी जी, आप एक प्रतिष्ठित असमिया लेखिका हैं। आपकी 26 पुस्तकें प्रकाशित हैं। आप प्रख्यात मीडिया व्यक्तित्व हैं और वर्तमान में असमिया साप्ताहिक सादिन और साहित्यिक पत्रिका सतोसोरी की संपादक के रूप में कार्यरत हैं। अगले प्रतिभागी पुल्ली कोंडा सुभाचार्य। आप एक प्रख्यात तेलुगु लेखक और विद्वान हैं। वर्तमान में आप हैदराबाद के पीएस तेलुगु विश्वविद्यालय में लोक कला और तेलुगु विभाग में सहायक प्रोफेसर के रूप में कार्यरत हैं। श्याम सुंदर दुबे जी, आप प्रतिष्ठित हिंदी कवि, उपन्यासकार, कथाकार, निबंधकार और आलोचक हैं। आपकी विभिन्न विधाओं में 60 से अधिक पुस्तकें प्रकाशित हैं, जिनमें प्रमुख हैं दाखिल, खारिज और सोनफुला, जड़ों की ओर, जहां देवता सोते हैं और अटकते भटकते एक आत्मकथा। स्वप्ना रानी सिंह, आपके पास में 8 साल से अधिक का शैक्षणिक अनुभव है और वर्तमान में आप शांति निकेतन पश्चिम बंगाल के विश्व भारती में उड़ीसा की सहायक प्रोफेसर के रूप में कार्यरत हैं। आपकी 7 पुस्तकों के अलावा राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पत्रिकाओं में 30 से अधिक लेख प्रकाशित हो चुके हैं। आप सभी का पुनः स्वागत। सपना सिंह जी, Polikonda Subachari, Anuradha Sharma, and Shyam Sundar Dubey ji. My friends, Professor Farooq Fayaz, Rafiq Masoodi, and others who are staying here, young and very young writers,
It is really a pleasure to be amongst you to talk on a subject that is not anybody's special, but everybody's special. Because water is reflected in life, and life is reflected in water. And then there is another thing, an adjective for water, it's flowing. Flowing means flowing is time. If you take the river, you cannot wash twice your hands in the same water, as you can't breathe in the same air twice. And without time and without this flowing water, life is almost nothing. शायद इसी वजह से हमारे कितने ही ये नए शहर हैं जो सिर्फ नदी के किनारे राइट लेफ्ट या बसे हुए हैं. हमारा शहर जो है श्रीनगर कश्मीर वैली वो भी झेलम के किनारे है. मुझे सबसे बड़ी अच्छी बात जो इसमें लगी, I would like to pay tribute to our President Sahitya Academy, Secretary K. Srinivasan, and other people who have participated in getting the names of these sabagars, these auditoriums. These are all from rivers. और दरिया इसी तरह से शायरी में है जैसे पानी हमारी जिंदगी में, जैसे वक्त हमारी लाइफ में. उसके बगैर मुमकिन ही नहीं है कोई पोइट्री हो, बिकॉज पोइट्री इज एन इंडेक्स ऑफ लाइफ. देन इट इज द मिरर ऑफ लाइफ. देन इट्स नॉट मिरर ओनली, देयर इज ऑलवेज ए मिरर बिहाइंड द मिरर. जो सूरत आदमी की नजर आती है उसके पीछे एक तूफान भी होता है, खुशियों का तूफान होता है, जज्बात का, इमोशंस का तूफान होता है, फीलिंग्स का तूफान होता है, खुशियां भी होती हैं, गम भी होते हैं. दैट्स लाइफ. एंड और ये दरिया क्या करता है, जैसे वो हर चीज को आगे ले जाता है अपने साथ, वैसे लाइफ भी किसी न किसी तरह से गुजर ही जाती है. और पानी की सबसे बड़ी बात यह है, आप अगर कोई रुकावट पैदा करते हैं, आप पत्थर सामने रखिए, उसे लड़ेगा नहीं. अगर पार बाहर ले जा सका इट्स ऑल राइट, अदरवाइज ये खुद को तकसीम करेगा और आगे चल करके फिर मिलेगा और अपना सफर जारी रखेगा. मुझे बड़ी खुशी है कि हमारे जबरदस्त पोएट, जबरदस्त राइटर, आई वोंट से कलाकार, जबरदस्त राइटर हमारे साथ इस शस में हैं. मैं वक्त नहीं लूंगा इसलिए कि पहले ही एक सेशन थोड़ा लेट स्टार्ट हुआ, देन दूसरे सेशन के शुरू होने पे भी फर्क पड़ा, इसलिए मैं फौरन ही अपने दोस्तों को बुलाऊंगा. और सबसे पहले मैं सपना रानी सिंह को इनवाइट करूंगा कि ये आकर के अपने ताशा, आई एम सॉरी ये एंकर का नाम मुझे मालूम नहीं है, बट शी डिड इट वेरी नाइसली. Despite that I had to say that, don't say kalakar, but she's she presented it very nicely and introduced my friends in a nice way, in a nice way, in a nice way. And so I thank her also. And now Sapna Rani, please. Whatever you like. You can take 14, you can take 13, you can take 10. Okay, sir. Thank you so much, sir. Good afternoon, everyone. Before starting, I would like to thank Sahitya Academy for giving me this opportunity to be a part of this literary festival. It is indeed an honor for me to stand before such great persons present here. The topic of today's session, rivers in Indian literature, is really a unique and interesting topic that it is as old as in the ancient literary context, it is equally new in the context of modern literature. And the topic is really very vast, and it would probably be difficult to do justice to it within a very few time, but still I will try my best. And the description of rivers in literature in all over the world is actually very common, because as per the geological survey conducted by the USA, there are over 3 million rivers in all over the world. So like the other natural resources,
river is also a part of our life and as well as the part of our literature. And in this context, I would like to say uh, uh, that the rivers, the important thing is the how the rivers are depicted in the world literature. That is important thing. And the other thing is, with time, how the writer's perspective have been changed over time. That is also important. In this context, I would like to say the role of rivers in Odia literature. Odisha, which is one of the flood-prone state, primarily because it is surrounded by many peninsular river like Mahanadi, Brahmani, Baitarani, etc. And my topic is divided into four group. First, I am telling about the science behind myth centering on rivers. The second, followed by history, and river as symbol, and river as beauty and disaster. And there are some work written in Odia literature. Those initially, uh, it is initially as considered as a myth, but later it became science. Chandrabhaga, which is written by the renowned writer of Odia literature, Radhanath Rai, uh, uh, which is often compared with Apollo and Daphne, written by the Roman poet Ovid. Yes, I will appreciate because the story is quite similar. In both of the poem, we see the conflict between the love of the god, which is also known as Kamdev in Indian content, and the god of the power, which is also known as sun. However, I want to draw your attention to the context which is hardly receive any attention. In this poem, the poetess describes some, in this poem, the poet has given some indication about the extinction of the Chandravaga river, which is very similar to the report given by the scientist. And for your information, I am telling that Chandravaga is not the river Chenab. There might be a confusion because the another name of Chenab river is Chandravaga. I am not telling about Chenab river. This is the ancient river is said to have flowed about 2 kilometers from Kuna Sun Temple of Odisha. The scientist from the Indian Institution of Technology and that sorry, the scientist from the Indian Institution of Technology Kharagpur used the satellite images and the field data to identify the river canals in 2016. And this is the second such finding after the Saraswati River, and this is what the poet is telling before 130 years ago. And the another notable work I'm telling about Mahayatra, which is inspired by the Shorgarohan Parva of Sharla Mahabharat. In this poem, we see the mythological fact related to the creation of the Chilika Lake. And this is also very unique in this context because in this work, we can see the mythological fact of the creation of Chilika Lake. According to the mythology created by Sharla Das, uh, which is told by Agnidev to the Pandavas when they are visit all the pilgrimage to Odisha after the destruction of Yaduvamsa, after killing Pradyumna, the Sri Krishna's chakra didn't return back to him. According to Agnidev, when that chakra is falling down, the Kali Yuga will begin from that day. During their conversation, that chakra is fall into the sea and the great flood is begin. And what remains after the cataclysm is came to be known as Chilika Lake. And this is the mythology. And what is science is talking about this, that according to the report by the marine archaeologist Ila Tripathi of the National Institution of Oceanography in Goa, it was first stated that the Chilika Lake was once the part of Bay of Bengal. The some other studies is also revealed that due to a tectonic movement, the Chilika Lake is separated from the Bay of Bengal through a split, so through a barrier split near Palur, the important port of Kalinga, and or the current Orissa around 4,000 years ago. So all this discussion, we can know that what the science is talking about today, the myth is telling before 400 or 500 years ago. I'm not talking about the science more because the time is very short. Jumping to the next portion, I am just telling how the history is related to the myth. And in Sharla Mahabharata, we see the description of many ancient river, and Prachi is one of them, considered the one of the most sacred basin of the state. And in Mahabharata, we see the very in Mahabharata we see there is lots of description made about the antiquity and the importance of Prachi river and as well as its valley. Before this, in 12th century, the Odia poet Jaydev also gives some indication about the antiquity and the importance of the Prachi river and its valley in his Git Govind, which is harmonized with the modern historical fact.
And recently in 2018, the Archaeological Survey of India carried out excavation at Bhartihuda and Jalharpur near Niali and unearthed valuable evidence of a civilization that is 3,500 years older, and which if established would be far older than the Indus Valley civilization. And in 1960, the modern Odia poet Guru Prasad Mahanti is also given some indication about the antiquity and the importance of Prachi River as well as its valley in his long poem Kala Purusha, which is not only historical but also important from the scientific point of view. Here, the writer is described that in ancient Kalinga, those Prachi river and the valleys got importance in modern Odisha. That is not getting that much importance. That because for that the author is blamed on the passage of the time. In modern time, where the person is rootless, what would be the root of a nation? That's why the author is taken a symbol of a cascata, which is popularly known as Nirmali Lata in Hindi or Odia. Why he is taking cascata? Because we might be think that as the modern and the postmodern man has rootless, that's why the author is taken cascata, because the cascata is a vine, those who are rootless vine, to represent this very well. I think if we are seeing from the scientific point of view, however, this symbol is perhaps even deeper, because in the modern and postmodern time, the peoples are confused about their gender also, because now it is considered there are more than two gender is existing today. And that's why the writer is taken cascada, because the cascada is a hermaphrodite vine, which is both male and female sexual organs. And beside this, Daya is also an important river of Odisha, which is flows through Dhauli, and which is also famous because of the Kalinga War, a pivotal battle that led Emperor Ashoka's conversion to Buddhism. As the war is believed to have fought on its bank, and the river was turned on the blood of the fallen soldier, and which is said have profoundly impacted Ashoka's view on violence. This legend is also criticized by many historians and as well as the economists like Sanjeev Sanyal. On 22/11/2015, Ashoka the Not So Great, on Swaraj magazine. But I'm telling you that in before this, in 1987, the renowned Odia scholar and the writer Surendra Mahanti wrote a novel named Ajivakara Autohasya, which is which is incorrupt the Daya river and the Ajivak Sampradaya that is emerged around the same time of Buddhism and Jainism. The author has long ago shown the difference between the form and the reality of Ashoka as presented to us. In this novel, the writer is described Ashoka as a great politician. And this type of several evidence I have, but I'm not telling about this, and how the river is beautifully represented as a symbol, as a deep symbol. I'm telling few about this. Like in Sharla Mahabharat, we see a very good example. We see a description of blood river, which is a symbol of fear, death, and self-analysis. And in this in this work, Sharla Das, with the help of this blood river, represent Duryodhana as an anti-hero, which is a modern day concept. And but Sharla Das described this 600 years ago. And the important thing is, we often see the love in the field of a woman, but after spreading the blood river, but after spreading the blood river uh, on the son who had fallen on his face, the grief of Duryodhana heart is described by Sharla thus: it's purely undescribable. And Jhoda, which is the another story by Bhagavati Charan Panigrahi, which is the another wonderful symbolic work that has become dynamic by centering on the river Ganga. In this work, the author has highlighted the hidden tendencies like survival instinct within a person. That means when it is matter of your life, you forget love and all that. And it is very obvious that within a life-threatening situation, our brain is prioritize the self-preservation, and which is causing a temporary suppression of the other emotions like love and all that. And this type of there are lots of example how the rivers are depicted as a deep symbol.
And beside this, by the influence of postmodern thinking, the writers of Odia literature, they are giving even a small rivers flowing through this land. Here we can see both the calm and the fairies rise of the river, the ancestor by Gopinath Mahanti, where we see the beautiful picture of Muran River, a very small river of that Koraput district, which is not only beautiful, but also spiritually connected to the tribals of the Koraput district. The conflict between East and West Odisha, portrayed by the Brahmani River in Bhanumatir Desha by Sachidananda Rautrai. The beautiful description of Muntai River is found in the story of Gaurahari Das. And Odisha is what I am telling before, that a flood prone state. And the Brahmini, Baitarani, Rushikalya, and Mahanadi all are the peninsular river, not the Himalayan river, and that is the cause of flooding. And in many literary work, we see the description of flood and their terrible form. The flood in Kathojodi River, described in the poem of Vishwajiban Pate by Radhamon Gadnaik. The flood in Baitarani, described in Fenged Water by Prasanna Kumar Misra. And as you know that every year the Odisha is faced flood and all that, and that several type of novel story is written about in this context. And beside this, the rivers of Odisha have also inspired some writers from outside the state to create literature. For example, Mahanadi, The Tale of a River by Anita Agnihotri, and her other work, Mahakantara, which is sequel of the previous work, where we see the beautiful description of Indravati River. Mohuldia Days. Mohuldia is a village name. Mohuldia Days is also a great novel by Agnihotri, where we see the beautiful description of Brahmani River. And the beautiful description of Kathajodi River is seen in the later work of Rabindranath Tagore. So we find many such work in Odia literature. I just try to be critical about some of them. Thank you for listening. Thank you so much. You listen to our Sopanaji. She is from Orissa, and Orissa, I tell you one particular thing about Orissa is that mostly all bureaucrats were writers. You can take the case of Sitakant Mahapatra. You can take the case of Ramakant Rath. So many people, my friend Pratibha Rai, Manoj Das also was there, then he had shifted, late Manoj Das. And many people, even journalists, I'll tell you one thing that haunts me even now. Years back, when I was in Orissa, Bhubaneswar, I asked one journalist, he was a columnist, journalist, editor. I said, why don't you resemble them in all respects? You are not that active. You are quite, he said, sir, the circulation of my journal is not that large. I said, how much is it? He said, just 20,000. I said, Hindi, Urdu people cannot imagine having it. Anyway, she has introduced this subject in a nice way. What I could not say, she has said, but she extended it to the lake also, Chilka Lake. And I am happy that she did not touch the sea because Puri also is there. And then she becomes from the land of water, and she did it so nicely. One thing I will say about my, just to hint my other fellow panelists here, water is everywhere. Novel, short story, when you talk of literature, it is everywhere. It's everywhere. And now I am inviting a friend of mine from whose land, from whose language, my friend N. Gopi, wrote a long poem on water only, Neer. Jalagitam. And then it's already available in Kashmiri also. And he was a man, he was with us on the executive board. He got that book translated in all the Indian languages during those 5 years. That was his contribution. He could do it. And now I request my friend Polikonda Subhashaji, so that he makes his presentation. And just, it's not necessary that he talks of every river or every day. Thank you. Thank you, sir.
Good afternoon, everyone. The luminaries on the stage and the galaxy in front of me, the galaxy of letters. I am Professor Subhachari. I got retired 8 years ago as a professor from Dravida University. After that, I worked in University of Hyderabad for 3 years as a visiting professor, and I credited 34 books. Among them, 4 are in English, and 270 research papers. Among them, around 60 are in English. And this is a research paper actually, but it's a big one and 7 pages. I cannot read read the pages as it is. It will be very painful to listen also. And my topic is rivers in Telugu literature. Actually, the culture and the reverence. There is a word, reverence. So there is a pun that river, from river to reverence. How we give reverence to rivers. That is important. And water is elixir of life. It is as vital as food to human beings and all living creatures. No human being can continue his or her life without water. It is believed that the supreme personality of the Godhead or the goddess bestows the creation, including all visible and invisible living beings. As such, the life giving water is treated as goddess. In the Telugu literature, culture, in particular, in Indian culture in general, water bodies are treated as goddesses and worshipped with reverence. A, a tank, we call it in Cheruvu, a tank, village tank, is a goddess. A river is a goddess. A well is a goddess. Even an ocean is a god, according to the belief system of Telugus. I would go on telling some important points here. There is one concept here in every Telugu ritual. There is we call it a sankalpam. That sankalpam is Shubhe Shobhana Muhurte Brahmana Divyatva Prardhe Svetakalpa Svetavatar Kalpe Vaivaswata Manmantre Sai कलियुगे प्रथमपादे जम्बूद्वीपे भरतवर्षे भरतखंडे मेरोर दक्षिण दिग्भागे श्रीशैलस्य ईशान्य प्रदेशे कृष्णा गोदावरीयोर मध्य देशे. This is the description how Telugu land is described. It is described as it is amidst of the Krishna and Godavari rivers and the sacred rivers. Sankalp kahalate. In every ritual, before we start every ritual, the sankalp is read, and it is a kind of oath taking. This kind of, after oath taking itself, we start every ritual, and that is the way how we give reverence to the rivers. When a family wants to dig a well for their family's purpose, they choose the right place as per the Vastu, then offer a puja to the goddess Ganga. The laborers start digging the well. They immediately inform the household when they find the water at some depth. The household offers a puja again to the goddess Ganga by sacrificing a goat or a chicken. The household offers a puja and sacrifice depending upon the financial status. If the household is a vegetarian, the family offers coconuts. Anyway, we have to offer a puja, a sacrifice to the goddess Ganga when we start digging a well or when we start constructing the tank. And even in Telugu culture, all tanks, Ura Chervulu, are goddesses. Every tank has a goddess of tank bund. We call it Katta Maisamma. Katta Maisamma is the guardian deity of Telugu tanks. When a Telugu person crosses a river, he offers a namaskar to the river and throws some coins from his pocket into the river. And ladies, if ladies are there, they offer a blouse piece or a sari to the goddess river. Then only they cross it. So this is the primitive idea that when a human being at his primitive level, he or she, a person, looks at the all natural forces as gods and goddesses. Sun is a goddess, god. Moon is a god. Ocean is a god. River is a god. Water bodies are two kinds: man-made water bodies
and natural water bodies. Rivers and oceans are natural bodies, and well and tanks are man-made water bodies. Reservoirs are also dams and all these things. Then what is Pushkara? Recently we have gone through the Maha Kumbh Mela, and it comes once in 144 years. What is a Pushkara? Pushkara comes once in 12 years. Then the Jupiter, the Brihaspati, when it synchronizes with the Rasi of a particular river, then it comes the 12 years Pushkara, and the Pushkara period is treated a highly sacred time period, and we offer oblations to our ancestors, and we offer a prayer to our ancestor at that particular sacred time. That is a Pushkara. And recently, even the sacrality of a person, offering a person, it moves through microwaves also. Recently, one short video, it is viral, it becomes viral. A woman, a lady, he makes a video call to her husband. Her husband is living a distant place, and she is taking a holy dip in the this Prayagraj. What she made is, she made a phone call to her husband, video call, and he is appearing on the phone, and she dipped the phone in the along with her husband's video in the river. That means the sacrality went through microwaves to that place. So how Indian sacrality, it crosses over, and what happens in other developed countries, when the modernity engulfs the culture, the traditions disappear there. But in India, it is reverse. If modernity comes into India, this modernity, this technology, it immerses in the tradition of Indian culture. And when a satellite is made to send it to the orbit, the satellite model is brought to Tirumala temple, offers a puja. This is why how rivers are sacred, and how rivers are prayed, and how rivers are revered. Reverence is given. And I'll give you some examples from literature. I'll take from Nannaya. Nannaya described Ganga, Yamuna, Saraswati, all three sacred rivers. And it is well known that Bhishma is the son of the Ganga, the goddess Ganga. The river Ganga is personified, and many of the rivers are personified. The river Saraswati is personified, the river Yamuna is personified, the goddess Ganga is the wife of Shantanu and gave birth to 8 sons, and she thrown all the 7 sons into the river Ganga, and the final one, the Bhishma, he survived. And the Bhishma is in many places, Nannaya described him as Suranadi Sunudu, Gangeyudu, Ganga Tanayudu. All these descriptions are given. And the river Ganga, in the similar way, Matinara is the person who married the river Saraswati. River Saraswati is also personified in Mahabharata. This Matinara is the person who married Saraswati, and he offered a yajna yaga for 12 years on the bank of Saraswati river. And then after 12 years, what happened? The river goddess impressed his reverence towards herself, and he liked him to marry. And this Matinara married this river Saraswati, and they got a son, Trasa. Dushyanta is the son of this Trasa, and the Bharata is the son of the Dushyanta. And the name Bharata Varsha, the country Bharata itself, derived from the Bharata, and this Bharata is derived from the Trasa. This Trasa is derived from the Matinara, and Matinara is the husband of Saraswati. See how our culture developed from the rivers. And a similar way, Yamuna is also personified in the Mahabharata in many places. After that, very important person is Potana. Potana described the Ganga Avatarana, how the river Ganga came down from the heaven to earth. Actually, what we do is, we offer our ashes of our ancestors. We go to river, we immerse the river ashes in the rivers. But here, it is reversed. Sagara, they were cursed. They turned into ashes in the ashram hermitage of the Kapila. Then the grandson of these Sagaras,
is Bhagirath. He was advised to offer a puja. He offered a tapas, and he invoked the goddess Ganga from heaven. And then the Ganga asked him, when I jumped down to the earth, who can bear me? Who can bear my speed, my force? Then again he offered a penance towards Shiva, and Shiva accepted. The goddess Ganga touched the feet of Vishnu, later jumped onto the head of the Shiva. After that, it came to earth and went into the Sagara's ashes, and Sagara became sacred. And I'll take 2-3 minutes because I have to give some more examples. Palkurki Somanatha also referred our rivers and confluence of rivers, and the person, the great poet Srinatha. Many people think that the great three poets, the trio of three poets, Nannaya, Tikkana, and Yarana, they did not describe Telugu culture and Telugu land very much. But the great Srinatha, he described Telugu lands, Telugu rivers, Telugu culture very wide. And similarly, Srinatha described all 7 Sapta Godavari in his Bhimeshwara Purana, in the Kashi Khandam. Excellent poems are there. Srinatha, he mentioned all Sapta Godavaris. The sacred Godavari, before it synchronizes with the ocean, it spread into 7 mouths, and all these 7 mouths join in the ocean, Bangalakhatam, and all these 7 mouths are called Sapta Godavari, and all these Sapta Godavaris are named after the Sapta Rishis. And they are, I'll tell them, just, I cannot read them. Okay. Gautami Sindhu Kanteya Kanvanadulu, Tulya Bhagayu Neleru Dammikonnalu, Bhavana Sambhavyamai E Punyabhumi, Anaga Samsara Tapa Shantaushadambu. I cannot translate it. And similarly, Tenali Rama, he is well known in every Indian language. He also described the Tungabhadra river in many times. Ganga Sangam Ichaginchune, Madin Kaveri Deveriga Nangikara Monarchune, Yamunaton Anandamum Bundune, Rangat Turanga Taranga Hastamulana, Ratnakar Endrunduni, Angambante Sukinchuneni, Gudabhadra, Tungabhadra Nadi. But I will become a bad man if I don't quote Vishwanatha Satyanarayana's great poem. I should quote it. Godavari Pavanodara Vah Puram Akila Bharatamu Madannanadu, Tungabhadra Samuttungaravama Toda Kavula Ganamu Sruti Kalupunadu, Penna Nadi Samutpannava Kairavadala, Srenilo Telugu Vasinchunadu, Krishna Taranga Ninnidra Ganamu Toda, Silpamu Tolipuja Seyunadu, Akshara Jnana Merugodo Andhra Jati, Vimala Krishna Nadi Saikatamulandu, Kokilapu Bata Pitsuka Golu Katti, Nerchukunnadi Purnima Nishalayandu. This poem is from Andhra Prashasti. He described many rivers. Krishna Kankana Kinkini Jhana Jhanat Kanchika Godavari Draksha Peshala Vangmai. This is one poem given by Nanduri Ramakrishnamacharya. And the similar way, one song from Adavi Bapiraju, it is very famous. Uppangipoyindi Godavari Tanu Teppunna Egasindi Godavari Kondallo Urikindi Konallo Nindindi Akasha Gangato Hastalu Kalipindi Adava Chentlanitini Jadaloda Turimindi Ula Dandala Guchi Mellona Talchindi Uppangipoyindi Godavari Tanu Teppunna Egasindi Godavari. There are many poems in this paper, and it's a research paper. I had to work it on this paper for 20 days around, and it will be published. I'll translate it into Telugu and Hindi also. मेरा हिंदी इतना सुंदर नहीं है, मैं हिंदी में ये प्रेजेंट नहीं कर पाया हूँ, सो क्षमा कीजिए. इधर अंग्रेजी सरल थी. Okay, that's good. I thank Dr. Srinivasa Rao Garu, and who chosen me to present this paper, to write a paper on rivers, how rivers are described in literature, particularly sacrality. My point is how sacrality is transferred onto the rivers, to a natural force. It is not sacred, it is not unsacred, it's a water. That's it. It's a material, it's a physical material, but sacrality is
sacrality is adapted on that one, and the culture, it goes on like that. Thank you very much. I thank all of my friends who are patiently listening. I must have taken. Thank you, Thank you. Professor Sabachari. It's again, I am reminded of one thing. You will see a difference between a paper reader and a paper reader. It is not only their background, it is actually water creeps into their thinking. पानी की सबसे बड़ी खुसूसियत क्या है? Would you please take it? पानी की सबसे बड़ी प्रॉपर्टी जो है ये है कि जिस कंटेनर में रखेंगे वही शक्ल अडॉप्ट करेगा, जो मजा मिलाएंगे वही मजा आएगा, जो रंग मिलाएंगे वही रंग आएगा। आप हीट अप कीजिए तो स्टीम बनेगी, फ्रीज कीजिए तो आइस बनेगी। आप सोचिए गर्मियों में अगर किसी के मुंह पे ठंडे पानी का छींटा मारे उसका एक असर होगा, अगर उसी के मुंह पे गर्म पानी का छींटा मारे तो वो दूसरा। एनीवे मैं ज्यादा ये उसमें जाना नहीं चाहता, लेकिन ये पानी का असर है जिसकी वजह से हमें डिफरेंट पेपर सुनने को मिलते हैं और डिफरेंट आइडिया सामने आते हैं। और इन्होंने जो इसको एक्सटेंड किया टू माइथोलॉजी, ये भी हमारे लिए नई बात, बड़ी बात, क्योंकि हम जो मुझ जैसे इग्नोरेंट लोग नहीं जानते ये सब। फॉर अस ये बड़ा यानी जबरदस्त कारनामा है इनका कि इन्होंने हमें उससे भी इंट्रोड्यूस किया और असल मौजू को भी, असल सब्जेक्ट को भी इन्होंने हाथ से जाने नहीं दिया। एक बात का अब मुझे अफसोस हो रहा है जब मैं देख रहा हूँ मेरा फ्रेंड गौरा हरी दास सामने बैठा है, तो दे माइट हैव कम टू लिसन टू आवर ओरिया participant, but somehow she has already read it. It was maybe my mistake or जल्दबाजी मैंने की. Anyway, she is there to discuss it with them. अब मैं आसाम से आई हुई अनुराधा जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि ये अपना वो लेख पेश करें, क्या है अबाउट रिवर्स, बट जस्ट ट्राई टू keep it confined to literature, and then that too, not to go to novels, not to go to short stories. If she could keep it restricted to shorter poems, that would perhaps give us a chance to gain more of Assamese, because we have seen Birendra Bhattacharya, Indra Goswami has been with us, and so many Assamese, I don't want to name them now, and she'll come and present her. Please. Will I make room for you? No, not 15 even. 15 तो हम भूल गए। आप इतना अच्छा बोले, भूले ही था। Thank you very much. My pranam to all of you, my respect, my regards to all of you in the dais, and already the wonderful chairperson also described everything about the feelings of water, and our co-speaker also already have described many things. I'm an Assamese writer, not Assamese actually, Indian writer writing in Assamese. Actually, I come from the bank of Brahmaputra. I will describe some legend and songs, lyrics from, it is attached with Brahmaputra river. But I will talk about, now I think that I think now that I should concentrate on my perspective. On my perspective, how I take rivers. Because in 2021, I received Sahitya Academy Award on my Assamese novel, that is Yat Ekhon Oranyo Asil, means there was a forest here. I have written there many things about the tributaries and the streamlets, which are being vanished by city culture. How it is vanished. I have written everything about that in my novel. So I recall some of my memories. Being a writer, actually, I take always the river very emotionally, very emotionally. When I go to the bank of the river, I don't know why, I feel something
that about my ancestors, my uh, own persons who left us already, because we did many rituals on the bank of the Brahmaputra and in Ganges also in the Haridwar. So I don't know how I connect, how I can connect with the river and with my own people. I have seen my grandfather, when our one of our pond was got dirty. He told me it's nothing. He just brought a bucket of water, bucket full water, and touched water, and just started uh, chanting like Gangesha Yamune Chaiba Godavari Saraswati Narmade Sindhu Kaveri Jalasminang Sandhi Kuru. Means Ganga, Yamuna, Godavari, Saraswati, Narmada, Sindhu और कावेरी कृपया इस जल में उपस्थित हो और इसे पवित्र बनाओ. So it is very interesting thing for me that how my grandpa uh, suddenly he brought the many rivers into the bucket instantly. So that is quite interesting. It is, I think, this is the tradition, this is the purity of our belief systems. So everything has been described. So I will go for a different chapters now. Rivers are frequently used as a powerful metaphor of life journey, symbolizing the ever-changing nature, human experience. Sometimes it represents as a connection between physical world and divine. Always, I think, just I have mentioned it, when I go to the river to do some rituals for my mothers, my fathers who passed away already, then I think that this river connected me with the physical world and the divine world, eternal world. Rivers always being teacher by observing a river, people can understand truth of life. Just like बड़े लोगों से मिलने में हमेशा फसला रखना, जहां दरिया समंदर से मिला दरिया नहीं रहता. Yeah, I believe these things always. But sometimes we have to meet people to know each other and to know about the qualities of people. River always carries a mystery and silence. I want to quote a stanza from Gitanjali 64. It influences me very much. In Bangla, নির্জন নদীর ঢালে লম্বা ঘাসের মাঝে আমি তাকে জিজ্ঞাসা করলাম, কুমারী, তুমি তোমার প্রদীপের ছায়া দিয়ে কোথায় যাচ্ছ? On the slope of the desolate river among all grasses, I asked her, maiden, where do you shedding your lamp with your mantle? My house is all dark and lonesome. Lend me your light. The light means andar ka jyoti, means the seeking of life from inner self. She raised her dark eyes for a moment and looked at my face through the dusk. I have come to the river. River means the life. These are the metaphors. It influences us. Floods devastating of rivers symbolize obstacles and challenges in poetry, lyrics. Here, world-famous poet, lyricist, singer, Dr. Bhupen Hazarika
Actually, we are growing with Bhupen Hazarika's song. And Dr. Bhupen Hazarika, actually, he had written above 500 songs, which is related to rivers in the world, whole world, you know. So he just uh, written actually these are the poetries, and when he tuned it, then it becomes a song. লুইতৰ বলিয়া বান তই কলৈনো ঢাপলি মেলিছ হুৰ হুৰ শবদে কাল ৰূপ ধৰি লৈ কাকনো বাৰে বাৰে খেদিছ Oh, crazy Luit. Luit is the popular name of Brahmaputra. Where you are going with your wild waves, don't be so cruel. Don't spoil our paddy field. Dr. Bhupen Hazarika had been written thousands of songs on rivers, not only the Brahmaputra of Assam, but many rivers and rivulets around the world often find an important place in his song. His songs like he is worried about the humanity. He has written that song. Perhaps you everybody know about the song. Bistar he apar, praja dono par, kare hahakar, nishabd sada. O Ganga tum, Ganga behti hu kyun? नैतिकता नष्ट हुई मानवता भ्रष्ट हुई निर्लज्ज भाव से बहती हूँ क्यों These are the agonies inside him. With anger, he questioned the holy river Ganga, why she is flowing calm and quietly while humanity, morality has been destroyed. On the other hand, the great iconic figure bridging the gap between two rivers, two cultures, two countries even, and many countries even, he is breathing out. Ganga amar ma, Padda amar ma, amar dui chokhe dui joler dhara, Meghna Jamuna. Ganga is my mother and Padma is also my mother. My tears from my eyes as Meghna Jamuna. He merged two boundaries of two countries in as a humanist ideology. Rivers always dominating force and symbols in Bhupen Hazarika's writings. The Brahmaputra also Brahmaputra has so many legend stories, and perhaps you know it is a male river. That's why it is called Santanukulanandan. In India, the Ganga River is a sacred river beside Yamuna, Sindhu, Narmada, Godavari, Krishna, Kaveri, also narrated holy river. Many mythologies surrounded by these rivers, tributaries. Saraswati River has prominence in Rig Vedas. Later Vedic and post-existed important role. The Brahmaputra has also legends, and the Brahmaputra is known as Santanu Kulanandan. Assamese writer Purobi Barmudoy. She was awarded the Sahitya Academy in Assamese language in 2007. That novel is named Shantanu Kulanandana, a saga of mighty Brahmaputra river. Here I would like to mention some notable literature work in Indian literature, which is influenced me very much. I have to mention Amrita Pritam's one poetry. It's influenced me very much. Ajakan Waris Sanu. After 1947, the violence occurred, and she had written this poetry. I want to mention about one very notable novel in my childhood, not my childhood actually, when I was 17 to 18 years old. It influenced me a lot.
That is Valga Se Ganga by Rahul Sankritayan. For me, it's the most valuable books among 10 best books in Indian literature. And after that, one book I remember always, City and the River by Arun Joshi, in 1990, published. It is a battle between, fight between social world and natural world, city and the river versus. River Dog by Mark Shand. And Mark Shand is not an Indian writer. He's not an Indian writer, but still, he has written a novel on Brahmaputra from Tibet to Bangladesh. That is River Dog. And it has been translated by Bipul Deori. And Bipul Deori, he got translated, he got Sahitya Academy Award in translation. Moreover, moreover, you have seen, perhaps you can remember the Lohit Kinare, the serials. It is broadcasted by DD network. Yeah, yeah, definitely. And one, I can mention one lady, woman writer. She's Sharna Bara. She's an Assamese writer, but she has written 7 novels on various rivers, and each and every novels, it is named with a river. So I have to mention about the Navakanta Barua's poetry, about Yat Nodi Asil. There was a river here. Once we went to boating on the Ganges. The pale winter moon rose above the water, above the old cemetery. We remember we talked, but we could not hear each other. I have to mention Hujjo Henu Namiya Hai E Nodiedi by Gyanpith awardee Nilamani Fukonn. And definitely I have to mention about the Senabor Sot. Senab, the current of Senab by Indira Goswami. There's lots of works actually, and these are the inspirations. The river always inspired those people to write a novel, write a poetry, write everything. So that I think that नदी को हमें जरूरत है, नदी को हमें जरूरत है, उसकी actually river, they don't want us, yeah, लेकिन for literature, for life, we always worship, we are always looking for the river. So my last words, that's why river must not be polluted for our life to flow, for our life and for our literature. It must not be polluted. Thank you so much. Whose fax is this? It's yours, okay. Thank you very much, Anuradha ji. It was a very, not only informed paper, but inspiring also. Many people will look at rivers now with a different angle, with a different view, have a different look on it, on water, after they will read this paper in full when it is published. Now I will request our Shyam Sundar Dubey ji. Now you can imagine, from his attire, you can imagine, from his name itself, that we are going to have a wonderful talk. We'll be listening to him as his disciples, as his students, and I think he will not try us as some other people do. So, thank you, sir. उसको थोड़ा ऊंचा करिए प्लीज
नहीं, थोड़ा ऊंचा, थोड़ा ऊंचा करो बेटा। ये एडजस्ट करता है। बस ठीक है, थोड़ा और ठीक। नदियों और साहित्य के समागम पर आयोजित इस महत्वपूर्ण संगोष्ठी के अध्यक्ष महोदय, इस संगोष्ठी में अपने पर्चे प्रस्तुत करने वाले विद्वज्जन, मेरे समक्ष विराजमान प्रबुद्ध श्रोतागण, मैं चाहता हूं कि जैसे नदियों का संगम होता है, ऐसे ही ये मंच भाषाओं का संगम भी बने। इसलिए इन अंग्रेजी वक्तव्यों के बीच मैं हिंदी को भी यहाँ प्रस्तुत करना चाह रहा हूँ। विषय साहित्य में नदियों को लेकर के है और मैंने कुछ काम भी इस विषय पर किया है। मैं दो तीन छोटी छोटी घटनाओं को लेकर अपना वक्तव्य प्रारंभ कर रहा हूँ। एक घटना जो बार बार मुझे नदियों पर सोचने विचारने के लिए प्रेरित करती रही है, वो घटना है आचार्य विद्यानिवास मिश्र से संबंधित। विद्यानिवास जी विदेश यात्रा से लौट रहे थे और किसी कारणवश उनका जहाज पाकिस्तान में रुक गया। पाकिस्तान एयरपोर्ट पर सुबह सुबह वो पहुंचे थे। पंडित जी कर्मकांडी थे, उन्हें लगा कि यहाँ स्नान कैसे होगा, यहाँ मेरा पूजा पाठ कैसे होगा। तभी एयरपोर्ट का एक अधिकारी उनके पास आया और उसने कहा, पंडित जी आप क्या बनारस से हैं? तो पंडित जी ने कहा, हाँ मैं बनारस से हूँ। उसने कहा, क्या गंगा वैसी ही बहती है? क्या गंगा के घाटों पर वैसी ही भीड़ जुड़ती है? पंडित जी ने कहा, हाँ। लेकिन पंडित जी ने पूछा कि तुम कैसे याद कर रहे हो? बोले, देश बट सकता है लेकिन वतन नहीं बट सकता। ये जो प्रसंग है ये नदियों की उस बात को स्पष्ट करता है कि नदियां विभाजन नहीं चाहती, नदियां जोड़ना चाहती, नदियां एक दूसरे से जोड़ने का प्रयास करती हैं। दूसरी घटना इसी तरह से है। मेरा गांव हटा मध्य प्रदेश में बहुत कस्बाई क्षेत्र है। हटा के बहुत पहले एक प्रोफेसर, फिजिक्स के प्रोफेसर कनाडा गए थे। कनाडा में वो बस गए। कनाडा में बसने के बाद एक कनेडियन लेडी से उन्होंने विवाह किया, वहाँ उनकी संतान हुई। कभी कभी हटा आ जाया करते थे। एक बार अपनी पत्नी के साथ वो हटा आए। मेरे घर वैसे ही बैठने के लिए पहुंचे, पत्नी उनके साथ थी। बातचीत होने लगी। मैंने कहा, पंड्या जी आप कनाडा में बहुत दिनों से हैं, जिंदगी गुजार दी आपने, आपको सपने कैसे आते हैं? एक ऐसा ही प्रश्न मैंने कर दिया कि आपको सपने क्या आते हैं? मेरे हटा में एक नदी बहती है छोटी सी, जिसका नाम है सुनार। बोले, सपने तो मुझे आते हैं
लेकिन मेरे सपनों में सुनार नदी ही ज्यादातर आती है और मैं उसमें डूब डूब करके नहाता रहता हूँ। 7 समुंदर पार बैठे आदमी के सपने अपनी छोटी नदी के लिए आते हैं। ये सपने और कुछ नहीं, हमारी जातीय स्मृतियों का ही एक पुंज है और हम स्मृति के माध्यम से न जाने कितनी संस्कृतियों से नदी के प्रवाह के साथ जुड़ते रहते हैं। तीसरी घटना है, मैं गांव का रहने वाला हूं। गांव से पिताजी के साथ कस्बे बाजार करने के लिए आता था। सुनार नदी बीच में पड़ती थी। वो कभी कभी नाव से संतरण उस पर होता था, कभी कभी हम लोग पैदल चल करके उसे उत्तीर्ण करते थे। जब पैदल चलते थे तो पांव पर्यंत, कटी पर्यंत जल उसमें रहता था। मेरे पिताजी पहले नदी को प्रणाम करते थे, उसके जल को छूते थे, उसके जल को अपने सिर पर डालते थे और कहते थे, माँ मुझे यात्रा के कारण आपके भीतर घुसना पड़ रहा है, मेरा अपराध क्षमा करेंगे। ये जो आध्यात्मिक भाव, ये जो पवित्र भाव नदियों के साथ है, ये भारत में ही आपको देखने मिलेगा। भारत के भीतर ही ये भाव आपको प्राप्त होगा। ये 3 संस्मरण मैंने इसलिए सुनाए कि ये ऐसे संस्मरण हैं जिसमें नदी स्थान की दृष्टि से, नदी स्मृति की दृष्टि से, नदी आध्यात्म की दृष्टि से हमें अपने महत्व और अपनी गंभीरता की ओर ले जाती है। नदियों ने हमें बहुत कुछ सिखाया है। नदियां मनुष्य की मानवीय चेतना को निर्धारित करने वाली केवल मानसिक संवाहिनी नहीं है, बल्कि मनुष्य के भीतर बहने वाली रक्त सिराओं के समान भीतर धरती के एक रक्त सिरा की तरह बहती रहती हैं। इसलिए एक तरह से अगर दूसरी माँ हम कहें तो दूसरी माँ हमारी नदी होती है। नदी से हमने परोपकार सीखा, परोपकाराय वहन्ति नद्याः। हमने साहस सीखा, संघर्ष सीखा, सातत्य सीखा, निर्मलता सीखी। साहित्य में नदी स्मृति खूब मिलती है, बराबर मिलती है। हर जगह के कवियों ने नदियों को इस तरह से स्मरण किया है। मुझे तो वो प्रसंग नहीं भूलता है नर्मदा किनारे का, कि रहा होगा कभी कोई प्रणय का संदर्भ और जहाँ वेत के तरु थे, वेत की लताएं थीं, वहाँ प्रेमी और प्रेयसी मिलते रहे होंगे। लेकिन बहुत दिनों बाद, बहुत संस्कृतियों के बदलाव के बाद, रेवा रोधसी वेतसी तरुतले चेतः समुत्कंठते, इस रेवा नदी के प्रवाहित होने के साथ ही उस प्रेमी को याद आता है कि हमने इसी नदी के किनारे बेतस वनों में कभी अपनी प्रणय क्रीड़ाएं की थी। क्या यमुना के पास जाने पर आपको कृष्ण याद नहीं आ जाते? क्या द्वापर याद नहीं आ जाता है? आता है। आप पहुंचिए यमुना के किनारे पर। यमुना के किनारे पर केवल यमुना नहीं दिखेगी आपको। यमुना के किनारे पर वह पूर्व अतीत जो घटित होता रहा है, वो पूरा अतीत कृष्ण की लीलाओं के माध्यम से आपके सामने स्पष्ट होने लगेगा। इसीलिए बिहारी ने लिखा था, मन होए जात अजो बहे बा जमुना के तीर। आज भी हमारा मन जमुना के किनारे उस तरह से हो जाता है जैसे हम कृष्ण के साथ मिल रहे हों। तरुणी तनुजा तट तमाल तरुवर बहु छाए। ऐसी यमुना को देख करके अगर हमें संस्कृतियां याद आती हैं, इतिहास याद आता है। अगर आल्हा में आप लड़ाइयां पढ़ना चाहें, लोक काव्य है आल्हा, बुंदेली का लोक काव्य है, उसकी लड़ाइयां पढ़ना चाहें तो लड़ाइयों का जो विभाजन किया गया है वो बेतवा का घाट, केन का घाट, इस तरह से खंडों में उसको विभाजित किया गया है। युद्ध का नाम बेतवा का घाट, युद्ध का नाम केन का घाट,
इसका अर्थ ये हुआ कि हम लड़ते भी हैं तो उस स्थान विशेष को हम नदियों के माध्यम से ही याद करते हैं। अनेक युद्ध नदियों के किनारे पर हुए, अनेक संस्कृतियां नदियों के किनारों पर आबाद हुई और नदियों के किनारों में समाहित ही हो गई। नदियों ने जब आंख खोली तब देखा कि मधुक्षरंति सिंधु बहा, सारी नदियों में लगता था जैसे मधुक्षरित हो रहा हो, जैसे अमृत बह रहा हो। ये उस समय का है जब वैदिक ऋषि देखता था। उसने लिखा, ऋग्वेद में आया है एक रूपक, नदियों के माध्यम से कवियों ने जो रूपक रचा, रूपक की जो रचना की गई वो मेटाफर, अगर नदियां ना होती तो श्रृंगार ना होता धरती का, अगर नदियां ना होती तो कविता में अलंकार नहीं आ पाते। इसलिए नदियां साहित्य के लिए, नदियां पृथ्वी के लिए, नदियां सृष्टि के लिए एक श्रृंगार की वस्तु है, श्रृंगार का आधार है। वो लिखता है कि विपाशा और शतद्रु, ये दो नदियां ऐसी प्रवाहित हो रही हैं जैसे जैसे दो घोड़ियां दौड़ी जा रही हैं। इतने से वो संतुष्ट नहीं होता है, फिर कहता है ये नदियां ऐसे दौड़ रही हैं जैसे 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 रथ में जुते हुए घोड़े दौड़ रहे हैं लेकिन एक दूसरे के मार्ग को रोक नहीं रहे हैं। ये जो रूपक है, ये रूपक स्पष्ट करता है कि नदी हमारी काव्य की सुषुम्ना में कैसे विद्यमान है। महाभारत में आई, रामायण में आई, वाल्मीकि रामायण में आई। नदियां साहित्य के लिए जड़ का स्रवित स्वरूप हैं। अगर नदियों का प्रवाह ना होता तो कविता भी नहीं रची जाती, क्योंकि नदियों के किनारे ही कविता ज्यादा रची गई है। और जो नदियों के किनारे कविता रची गई है उसमें संस्कृति का प्रवाह है, उसमें जातीय स्मृतियों का प्रवाह है। हमारे अध्यक्ष महोदय भी देख रहे हैं घड़ी की ओर, और हो सकता वो मुझे टोकने लगे, लेकिन मैं अंत में आया हूं और हिंदी में बोला हूं, इसलिए मैं चाहता हूं कि थोड़ा सा समय मेरे लिए देंगे। क्या है कि मैंने अभी तक ऐसा कोई साहित्य नहीं पढ़ा है किसी भी भाषा में जहां नदी न आई हो। नदी निरंतर प्रवाहित होने वाली वह चेतना है जिस चेतना के माध्यम से न केवल पृथ्वी श्रृंगार करती है बल्कि वह हमारी अंतस चेतना का भी श्रृंगार बनकर के प्रवाहित होती है। ये नदी का बहुत बड़ा मूल्यवान पक्ष है। नदियों को जब कहा गया कि क्या क्या संख्या, कितना लोगों ने देखा नदियों को, नदियों की मैं बात कर रहा हूं तो मैंने नदी पर किताब लिखी है एक, और जब मैं किताब लिख रहा था तब मैं देख रहा था कि मैं जिन नदियों का अभी सत्यापन कर रहा हूं वे नदियां 1000 वर्ष पूर्व कवियों के माध्यम से, ऋषियों के माध्यम से अपनी भौतिक स्थिति में उसी तरह से रही हैं जैसी आज हम पढ़ते हैं। श्रीमद् भागवत पुराण में हो या अन्य पुराणों में, ब्रह्म पुराण में हो, विष्णु पुराण में हो, इन सब पुराणों में नदियों की वही भौगोलिक स्थिति मिलती है जो आज है। मुझे आज अचरज होता है कि उस समय का कवि क्या हिमालय के उत्तुंग शिखरों पर भ्रमण करता रहा होगा, उसने स्रोतस्वनी को वहां से देखा होगा, लेकिन मुझे लगता है कि नहीं देखा होगा। तब तो हजारों वर्ष पूर्व उसने नदियों की उस भौतिक स्थिति को स्पष्ट किया है, अन्यथा कैसे करता। ये नदियों के प्रति लोगों के मन में कितनी जिज्ञासा और कितना अन्वेषण परक भाव रहा है, ये नदियों के इस इतिहास को देख करके हम जानते हैं। जैन ग्रंथ एक तिलाय पणत थी जिसमें नदियों की संख्या 70,92,090 नदियां केवल जम्बूद्वीप में बहती थी। 70 लाख और 92,090 rivers were flowing on the earth.
at that time. ये जो संख्या परिगणन है, ये अनुमान नहीं है, ये उस समय लोगों ने अनुभव किया था। गंगा, यमुना, इन सब की माइथोलॉजी है। नदियों को हमने जीवित सत्ता माना है। जीवित सत्ता तो हमने सारी प्रकृति को माना है, लेकिन नदियां प्रवाहशील हैं, नदियां गतिशील हैं, नदियां ध्वनि करती हैं, नदियां चट्टानों को काटती हैं, नदियां ऊर्ध्व और निम्न को पाटती हैं, नदियां हमारे भीतर हमारे साहस को, हमारी उन्नति को आश्रय देती हैं। इसलिए नदियां केवल नदियां नहीं हैं, नदियां एक जीवित सत्ता है जो हमारे भीतर हमारे जीवन को गढ़ती है, हमारे जीवन को आकार देती है, हमारे जीवन को गति देती है। नदियां, देखिए, नदियों की कथाएं हैं, मनुष्य जैसी कथाएं। गंगा की कथा है, नर्मदा की कथा है। नदियां किसी देवता के पसीने से उपजी हैं, नदियां किसी के तपस्या के परिणाम स्वरूप उपजी हैं, नदियां किसी के आंसू से उपजी हैं। तात्पर्य ये है, तप, साधना, करुणा, साहस, इनसे नदियों को बनाया गया है। आंसू से बनाने का तात्पर्य है नदियों में निहित करुणा भाव। तप से और साधना से तात्पर्य है कि उसको कैसे बनाया गया। मैं अथर्ववेद की बात कर रहा हूं। अथर्ववेद में नदी को थोड़ा थोड़ा सुरक्षा की दृष्टि से स्वरूप दिया गया। ऋग्वेद में नदी को इतना पवित्र थी नदी की, उसके लिए कोई स्थापत्य नहीं बनाना था। अथर्ववेद में नदी के स्थापत्य को बनाया गया और 4 भाग नदी के किए गए, गर्भ, पाट, घाट और बाट। इन नदी को 4 भागों में विभाजित किया गया। ये इंजीनियरिंग थी नदी की, ये आंतरिकीय दृष्टि से नदी को देखा गया था। गर्भ का मतलब था जितने में नदी के जल का प्रवाह है। बाट, घाट का मतलब, पाट का मतलब था कि रेती जो फैली हुई है, रेतीला बिस्तर जो बिछा हुआ है, वो पाट था। और फिर जब सीढ़ियां बना करके हम ऊपर तक जाते थे किनारे के, तो वो घाट था। और इस घाट से लगभग 1.5 किलोमीटर दूर बाट बनाई जाती थी। बाट माने रास्ता। ये जो स्थापत्य है कितना महत्वपूर्ण है। नदियों के किनारे ना मंदिर थे, नदियों के किनारे ना भवन थे, नदियों के किनारे जंगल थे। उसकी इकोलॉजी सुरक्षित रहे, उसका जो स्थापत्य है वो सुरक्षित रहे, इसलिए नदी से 1.5 किलोमीटर दूर मार्ग बनाया जाता था। उस 1.5 किलोमीटर में सघन वनांतर होता था, सघन वनाली होती थी, और उसी वनाली में आश्रम बनते थे, उसी वनाली में यज्ञ होते थे, उसी वनाली में सत्संग होते थे। मैं नर्मदा की चर्चा करना चाहता हूँ। नर्मदा के ऊपर एक पुराण ही लिखा गया है, नर्मदा पुराण, और ब्रह्म पुराण में रेवा खंड है, और ये रेवा खंड पूरा नदी के ऊपर है, नर्मदा के ऊपर। जैसा अभी हमारे हो बता रहे थे कि संकल्प में गोदावरी के केंद्र को लिखा जाता, हमारे यहाँ भी संकल्प में कहा जाता है रेवा खंडे उत्तर दिशाम। रेवा खंड की उत्तर दिशा में संकल्प जब लेते हैं तब कहा जाता है रेवा खंडे उत्तर दिशायाम। ये रेवा का महत्व तो इतना है कि वो गंगा से भी अधिक प्राचीन नदी है। गंगा तो बाद में आई, नर्मदा पहले आई नदी इस पृथ्वी के ऊपर। नर्मदा को लोक ने किस तरह से देखा है, मैं थोड़ी सी लोक की बात करूंगा, फोक की बात करूंगा, क्योंकि साहित्य में केवल लिखित साहित्य नहीं है, मौखिक साहित्य भी है, और वो लोक साहित्य है। लोक साहित्य ने कैसे नदियों को देखा है। नर्मदा के ऊपर लोक ने एक कथा रची। कथा ये है कि नर्मदा और सोन, ये 2 नदियां हैं जो अमरकंटक से निकलती हैं। सोन पहाड़ से गिर करके इस दिशा में चला जाता है, और नर्मदा पहाड़ पर से प्रस्वृत होकर इस दिशा में चली जाती है। सोन
नर्मदा पश्चिम प्रवाहिनी है, सोन थोड़ा सा उत्तरवर्ती प्रवाहित होता है। नर्मदा को विवाह करने की इच्छा हुई, ये लोक कथा है, सुनिए, ये लोक कथा है। नर्मदा को विवाह करने की इच्छा हुई तो उसके पास एक छोटी नदी बहती है जिसका नाम है जोहला। जोहला, उसने जोहला से कहा कि मेरे विवाह का प्रस्ताव तुम सोन के पास ले जाओ, मैं सोन से शादी करना चाहती हूँ। तो जोहला सोन के पास नर्मदा के विवाह का प्रस्ताव लेकर पहुंची और सोन ने जो जोहला को देखा, माने दूती को देखा, दासी को देखा, तो सोन उस पर रीझ गया और उससे उसने विवाह कर लिया। जिसने विवाह के लिए न्योता भेजा था उसको तो भूल गया, जो न्योता लेके गई थी उससे उसने विवाह कर लिया। और नर्मदा इतनी क्रोधित हुई इस कांड से कि वो उल्टी प्रवाहित हो गई, वो प्रवाहशीला पश्चिम की ओर हो गई। अगर नर्मदा का प्रवाह आप देखेंगे तो लगेगा कि नर्मदा गुस्से में बह रही है, क्रोध में बह रही है, चट्टानों के काटते हुए, चट्टानों से लड़ते भिड़ते नर्मदा बह रही है। ये जो बात है, ये बात लोक करता है। हम बुंदेलखंड में जब बुंदेली लोकगीत गाते हैं तो नर्मदा के किनारों की, नर्मदा से जुड़े भावों को भी अभिव्यक्त करते हैं। नर्मदा तो दो ही ढियन, मोरी गुइया छिड़ी है पहले पार। इसका आप अर्थ नहीं समझेंगे। इसका अर्थ ये है कि गांव की एक सखी कहती है कि नर्मदा में पूर आ गया है और मेरी जो सहेली है वो नर्मदा के उस तरफ है। तो जो वो सहेली उस तरफ है वो कहती है कि नर्मदा के ठाणे दरवाजे मोए मायके के दियला दिखाएं। नर्मदा के दरवाजे इतने बड़े बड़े हैं कि जब मैं उन पर खड़े होती हूँ तो मुझे अपने मायके के दीपक जलते हुए दिखाई देते हैं। नर्मदा कुंवारी है, लेकिन कुंवारी नदी के सामने खड़े होकर के लड़की को स्मरण आता है अपने मायके का। अपनी माँ, ससुराल वाली लड़की को नर्मदा स्मरण कराती है कि ये मायका भी महत्वपूर्ण है जितना ससुराल महत्वपूर्ण है। हम आज के संदर्भ में बात करें तो स्पष्ट होता है कि हम जो मायके में और ससुराल में विभाजित हो रहे हैं, ये विभाजन नदियां नहीं कराती। नदियां सबकी सास हैं, नदियां सबकी बहू हैं, नदियां सबकी ननद हैं, नदियां सबकी माँ हैं। इसलिए नदियां आपको संबोधन देती हैं, नदियां आपको सिखाती हैं कि जीवन कैसे जिया जाए। क्योंकि मैं थोड़ा समय को अतिक्रांत कर गया हूँ, इसलिए मैं चाहता हूं कि मैं कुछ कविताओं से आपको नदी के विषय में, हम बिल्कुल 2 मिनट में। नरेश सक्सेना की कविता है, पुल पार करने से पुल पार होता है, पुल पार करने से पुल पार होता है, नदी पार नहीं होती। पुल पार करने से पुल पार होता है, नदी पार नहीं होती। नदी पार नहीं होती नदी में धसे बिना, नदी पार नहीं होती नदी में धसे बिना, नदी में धसे बिना पुल का अर्थ भी समझ में नहीं आता। कभी आप नदी में धसिए, नदी में घुसिए, महाकुंभ में जाके गंगा में डुबकियां लगाइए तो आपको अर्थ पता चलेगा कि नदी क्या होती है और पुल क्या होता है। मैं अपनी एक कविता से इस वक्तव्य का समापन कर रहा हूं। कविता है, धरती पर यदि ना होती ये नदियां तो धरती कहाँ छिपाती अपना मैल मत्ता भरा सूरत, कहाँ से फूटता पहाड़ों की गंभीरता का उजलापन और कहाँ से लाता समुद्र अपना हुंकार भरा अहंकार। ये नदियां आदमी की जड़ों से चिपकी हैं धरती की ऊबड़ खाबड़ बक्ष पर, जैसे दूध की सिराएं फैली रहती हैं माँ के स्तनों में। सींचती रहती हैं नदियां ऋतुओं की आंखों को, अपने उर्वर सपनों से बुझा देती हैं वे आदमी की भूख प्यास, जिसे बुझा नहीं पाते बाज वक्त मेघ। नदियां अपनी एक अंजुरी से ही
लबालब भर देती हैं इतने सारे फैले खेतों के ढेला ढेला होते अनमनेपन को। इतिहास के भीतरी अलकों में बहती हैं नदियां, काल प्रवाह को आकार देती, विचारों की चट्टान काटती, लड़ती चट्टानों अवरोधों से। नदियां न जाने कहां कहां ले जाती हैं संस्कृतियों की अस्थियां, समय की राख, पालतनी नामों की स्मृतियां। आदमी फिर भी बांटना चाहता है कटी बाजुओं सा इन्हीं नदियों को, अपने आंगन की मोरियों सा। नदियां फिर भी बहती हैं धरती की वत्सल अनुभूतियों से। ये संगोष्ठी अत्यंत सफल रही। हम नदियों के विषय में न जाने क्या क्या कितना अनुभव यहाँ इकट्ठा किया है। मैं साहित्य अकेडमी के सचिव और इस राष्ट्रीय संगोष्ठी के अध्यक्ष महोदय को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि इन्होंने मुझे अवसर दिया बोलने का। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हमने सपना जी को सुना, अनुराधा जी को सुना और अपने प्रोफेसर सुबाचार्य जी को, और लास्ट में श्याम सुंदर दुबे को। हकीकत में आज एक बार फिर मुझे मालूम हुआ कि आदमी कोई भी काम करे कहीं भी हो, उसका अपना जो है वो चाहता है कि वो कहे। और मैं एक सामने की बात बताता हूँ कि जब तक हम लोग बैठे थे, श्याम सुंदर जी को ये फिक्र थी कि ये ज्यादा बोल रहे हैं कहीं मेरे लिए वक्त न बचे, और इन सब ने उनके लिए वक्त की कुर्बानी दी, थोड़ा थोड़ा समय वो बचा लिया और इनको ये मौका मिला। अब तो ये है कि यहाँ कई तरह से गुफ्तगू हुई, माहौलियात के एतबार से भी, एनवायरनमेंट के एतबार से भी दरियाओं के बारे में बात हुई। इसमें यानी इंसानी जिंदगी से, जीवन से कितना इसका गहरा रब्त है, उस पर भी बात हुई। और ख़ास नदियाँ जो हैं, आजकल तो महाकुंभ का वो हो ही रहा है, हमेशा प्रयागराज से फ़ोन आते रहते हैं, बनारस से, इलाहाबाद से। मैं बहुत गया हूँ। कभी किसी ज़माने में हम लखनऊ से एक ही गाड़ी चलती थी, वो त्रिवेणी एक्सप्रेस, जो इलाहाबाद ले जाती थी। तो उसके बाद तो खैर कई गाड़ियाँ हो गई हैं अब। और लोगों का इस तरह से जमा होना, फेथ की भी एक बड़ी बात होती है। फेथ अपनी जगह, अकीदत अपनी जगह बहुत अहम है। हमारे यहाँ मुस्लिम्स में मशहूर है, एक मौलवी साहब थे, उसने अपने चेलों को एक वजीफा दे दिया, कुछ व्रत करने के लिए, पढ़ने के लिए कुछ लफ्ज, कि जब भी दरिया पार करना हो तो ये लफ्ज पढ़ो, दरिया पार करो। एक दिन ये खुद इनके साथ था। मैंने कहा मौलवी साहब आप चलते क्यों नहीं? ना तुम चलो। उन्होंने वो बिस्मिल्लाह पढ़ा या वटेवर, और उन्होंने क्रॉस किया, और मौलवी जी देखते रहे, इसलिए कि उसका, उसकी अकीदत ही नहीं थी, उसका उसमें उसकी फेथ ही नहीं थी। और दरियाओं के साथ हमारा ताल्लुक जो है, मैं कहता हूँ कि हमारे बचपन में हमने तो स्विमिंग दरियाओं में सीखी है, हम थोड़ी किसी स्विमिंग पूल में गए हैं। और हमसे कहा जाता था कि कोई रद्दी चीज हो उसमें न डाली जाए, सिर्फ अगर कोई तावीज हो, अगर कुरान का कोई वर्क हो, ग्रंथ का कोई वर्क हो, जिसको जो इधर उधर न हो, उसको हम पानी में डालते थे, इसलिए कि उसको पवित्र समझते थे कि पवित्रता जो है वो उसके साथ वो चलेगी। एक खास बात की तरफ मैं इशारा करना चाहूँगा कि हम, ये कोई उर्दू वाला नहीं था, कश्मीरी वाला भी नहीं था, इसलिए तसव्वुफ की बात नहीं हुई, सूफीज़्म की बात नहीं हुई। सूफीज़्म शुरू होता है इससे कि सब उसी से है, और ख़त्म होता है इस पर कि सब वही है। और उसकी मिसाल सबसे ज़्यादा सिर्फ पानी से दी जा सकती है। बीच में मैंने कहा ऐसे ही कि पानी जो है, जिस बर्तन में डालिए वही शक्ल इख्तियार करेगा, जो मज़ा में लाइए वही मज़ा। अब मैं डिटेल में नहीं जाना चाहता, लेकिन जब ये पानी कहे कि मैं उसी से हूँ, ठीक है, दरिया से हमने लिया है, पानी तो वहीं से लिया है, लेकिन जब ये कहता है मैं वही हूँ, तो परेशान होने लगते हैं हम, ये कैसे हो सकता है? एक ट्रफ में रखा हुआ पानी, टम्बलर में रखा हुआ पानी, बॉटल में रखा हुआ पानी कहे मैं ही पानी हूँ, मैं ही सब कुछ हूँ। लेकिन एक बात है, जब हम केमिकल एनालिसिस करते हैं, तो इससे भी एक ड्रॉप लेंगे, उससे भी एक ड्रॉप लेंगे, हर ड्रॉप का रिजल्ट वही होगा,
2 parts of hydrogen and 1 part of oxygen. बेसिकली लाइफ जो है वो इसी तरह से इसमें है। यही वजह है कि हमारे यहाँ की जिंदगी दरियाओं के किनारे शुरू हुई, शहरों के नाम उसी से पड़े। पंजाब 5 दरियाओं के नाम से वो पंजाब 5 मिले, इसलिए पंजाब हो गया। हमारे यहाँ कश्मीर में ये झेलम, उधर पार भी वो झेलम है। इसी तरह से कितने शहर ऐसे हैं जो, बल्कि हम तो कहते हैं इंडियन कल्चर जो है, अगर इन नटशल एक जुमले में, एक तरकीब में कहना हो कि हिंदुस्तान की तहजीब क्या है, हम क्या कहेंगे? गंगा जमनी तहजीब। 2 दरियाओं का नाम लेके हम पूरे हिंदुस्तान को उसमें समूह देते हैं। मुझे बड़ी मसरत है, मैं ये विद्वान हैं, सारे अपने-अपने तौर पे यानी बड़े लेखक हैं। इनकी मैंने इन्होंने जो कुछ कहा उस पे मैं क्या तबसरा करूँ, लेकिन एक बात मैं कहूँगा कि जब ये पर्चे, जब ये पेपर्स छपेंगे, स्पेशली उड़िया जी का, ये सपना जी का पेपर जो है, जितनी बातें उन्होंने उसमें कही दरियाओं से मुतल्लिक एंड देन राइटर्स के मुतल्लिक, इवन प्रोज में, पोइट्री में, लिटरेचर भी किस तरह से आया है। इसी तरह से हमारे तेलुगु के यानी सुभाचार्य जी जिस तरह से इन्होंने तेलुगु के हवाले से दरियाओं का जिक्र किया, और अनुराधा जी ने जिस तरह से दरियाओं के हवाले से बात की, ठीक है, इसमें माइथोलॉजी भी आई, और इसमें जिसे हम कहेंगे नॉन माइथोलॉजी, मॉडर्निज्म वगैरह, वो भी आया। मगर बात ये है कि हम पानी से हैं और पानी हमसे नहीं है। एक बात उन्होंने बहुत उम्दा कही, अनुराधा जी ने, कि नदी की हमें ज़रूरत है, नदी को हमारी ज़रूरत नहीं। पर ये आदमी ऐसा है, ये क्या करता है, इधर डूबा उधर निकला, उधर डूबा इधर निकला। और मैं अब इनसे कहता हूँ कि ये जो हमारे ऑर्गेनाइज़र हैं वो अपना काम करें, और मैं समझता हूँ कि ये सेशन बहुत कामयाब रहा। बड़े विद्वानों से हमने उनकी यानी उनके न सिर्फ लेख बल्कि उनके तासुरात जो हैं, उनके जज्बात जो हैं, उनसे हम महसूस हुए। थैंक यू। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। मोहम्मद जमा आजुर्दा सहित अन्य प्रतिभागियों का मैं एक बार पुनः आभार प्रकट करती हूँ। यह सत्र यहीं पर समाप्त हुआ और अब कार्यक्रम के तीसरे सत्र की तरफ हम लोग बढ़ेंगे लंच के बाद। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।